इफ यू हैड टू चूज वन प्लेयर जिसके साथ आप खेल के बहुत बेटर हुए, हु वुड इट बी? सो मेनी यार भाई, गिव मी 1 or 2 नेम्स जिसकी वजह से यू फेल्ट कि यार इस इंसान ने मुझे पुश किया मेरे गेम को इम्प्रूव करने में. because you're talking about foreigners, I'll give you some foreign names. I think in my team there was somebody called John Johnson, who was an Englishman. Okay. There was Miku. What did they do? How did they improve your game? They were different, man. They were the quality they got. Dimas from Spain, the quality they got was different. A lot of players that are playing ISL against. What do you mean by quality when you say quality? थोड़ा explain करो मुझे कि रनिंग बेटर थी, एजिलिटी बेटर थी, स्किल्स बेटर थी, टच बेटर, लेवल बेटर था. लेवल मतलब so यहाँ पे जो चीज़ें बोली ना, एजिलिटी, रनिंग, टच, फोकस, गेम IQ, जो एक प्लेयर को प्लेयर बनाता है, ये एक 2 लेवल बेटर था. एंड इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम दे कम फ्रॉम. इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव डन, नेचुरल टैलेंट. बिकॉज एक प्लेयर को बनने में ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्टिकल्स टू कम टुगेदर, एंड देन यू बिकम द काइंड ऑफ प्लेयर जिसके साथ आप खेल रहे हो. Fair. मैं आपको एक बहुत ही क्रेजी, एंड आई माइट गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर दिस, बट आई गेट वेरी क्रेजी हाइपोथेटिकल सिचुएशन. Okay. Man City dominates Premier League, and in the last 5 years they have won the Premier League multiple times, and you can always bet कि ये जीतेंगे. आप Man City को ISL ले आओ, and 3 years Man City is going to play in ISL. Hypothetical, please don't judge me. But obviously they're going to win it. You probably will put your house. 3 साल वो यहाँ खेलते हैं in this level. Same team, Haaland, Pep, everyone, the coach, everyone, and they win the league 3 times. After playing here 3 years, they go back to Premier League. I can bet they will not win the league. What changed? Same players. They came here, they won. What changed was the players they were playing against. And that's why more or less I give 3 years. 3 years के बाद I probably would bet my house कि वो जाके Premier League नहीं जीतेंगे, because 3 साल तक they were training here, playing, and I'm not trying to demean our league by the way. I'm just saying after a point you become, जिनके साथ आप उठते बैठते खेलते वेलते हो, वैसी प्लेयर बन जाओगे. More or less. It takes time. It doesn't happen in a day. If Messi comes here, spends 2 weeks, he go back, he's not going to change. But when it's 3 years, difference starts showing. So इसीलिए when good foreigners come in, and again when I say foreigners, I don't mean the nationality, I mean quality. When better quality players come, it doesn't matter if it's a foreigner. अगर कोई गुजरात से आया और वो बेटर है, आपकी टीम को बेटर बनाएगा. और पता है उस बेटर में सबसे बड़ा चीज़ क्या है? हंगर. क्योंकि उस लेवल पे ना दोस्त, the skill difference isn't much. How badly do you want? And you want those characters. It is unbelievable. And why do you say so? I'm breaking your thought here, but it's a very interesting thing that you said. आपने बोला कि उस लेवल पे स्किल इतना डिफरेंट नहीं होता, हंगर होता है. So give me, I'm again hypothetical with all due respect. You're telling me, let's say कि आप में इतना हंगर नहीं जितना एक मेसी में होगा. नहीं. Then I didn't say that. I'm saying when the player comes, we do judge the player as to how hungry he is. उसका जो लगा लो, for you to understand, a player is super talented, has all the attributes, but लगा लो उसका money नहीं है. And when I say money नहीं है, don't think उसका मन 0 है. लगा लो उसका मन 70% है. And when I say मन मतलब, how do I make you understand, Raj? Okay, the moment I say football, I'm just digressing so that I can make the point and you will know what I'm saying this. दिमाग में क्या आता है? पैर, ball, shooting, heading, sliding, है ना? That is, the touch with the ball is 2 minutes for Lionel Messi. And he's the best in the world. बाकी के लिए 1 minute 40, 1 minute 30, 1 minute 60, ऐसे, 1 minute 50, ऐसे टाइम आपके पास है with the ball. In the whole game. 88 minute आप भाग रहे हो, तोड़ रहे हो, स्लाइड मार रहे हो, लाइंस मेंटेन कर रहे हो, सोच रहे हो, खींच रहे हो. There is no ball. There is no ball with you. The best in the world, the Messis and the Hazards and everyone have 2 minutes. So 88 minute आपने वो dirty काम करना है. Because no one likes it. Today if I tell you, Raj, आज यार ट्रेनिंग करेगा मेरे साथ, I love to. And you will come and I'm saying
2 महीने से आप भाग ही रहे हो, स्पीड ड्रिल्स, लैडर्स, स्पीड ड्रिल्स, किसी को मार्क कर रहे हो कॉर्नर में, बॉल टच नहीं कर रहे हो, आप पागल हो जाओगे। आप लोग यार मैं तो फुटबॉल खेलने आया था। और दैट्स द रियलिटी। एक गेम में 2 ही मिनट है आपके पास बॉल, बाकी 88 मिनट्स डिसिप्लिन। कोच ने ये बोला ये करना है, इसको मार्क करना है, ये मार्क करना है, ये लाइन मेंटेन करना है। इसके लिए अगर आप हंग्री नहीं हो तो इट डजंट हेल्प, कि बॉल नहीं है ना आपके पास, जो बेस्ट पार्ट है वो नहीं है। एवरीवन वांट्स द बॉल, सो डिसिप्लिन वो चाहिए, इज द वर्ड, वो चाहिए। एंड what happens is every day जाकर सेम monotonous काम without the ball करना, if you're not hungry enough, after a point fame, money, flashes and everything, the watches and all, ये साथ नहीं देंगे। Agreed. एक टाइम तक ये आपको मोटिवेट करेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन हु यू आर वो टाइम स्पैन बढ़ता कम होता जाएगा। बट इफ यू नॉट लाइक आई वांट दिस मैन, आई रियली वांट दिस, क्योंकि अगर 88th मिनट है, आपको किसी को मार्क करना है, आपने मार्क किया, हल्का सा छोड़ दिया एंड ही हेड्स अ गोल एंड टीम विंस, यू हैव लॉस्ट द गेम फॉर योर टीम। सो उधर यू हैव टू बी लाइक मुझे चाहिए, नहीं छोड़ूंगा इसको। एंड वन नेम दैट कम्स इन माय हेड जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, देयर इज अ गाय कॉल्ड संदेश जिंगन इन आवर टीम। ही इज मैड इन दिस मैनर। You want these players because every day आपका skill काम नहीं आएगा. Some days you'll have a bad touch. Some days you will miss goals. But I am going to fight for the team. I don't care how I'm feeling, how I'm doing. मेरे को एक काम है, ये मेरा काम है, मैं करूँगा. And those players are the ones who have a longer career. Those players are the ones who have inspired generations more. Whether it's a Djokovic, whether it's a Ronaldo, whether it's a Messi, all the players who have played for longer time and inspired more people are the ones who, one of the attributes they have is they are hungry. Man. You see Ronaldo yesterday. Yeah. He misses a goal, he cries like a baby. And it was so painful to watch him miss a penalty. I'm not a Portugal fan. I'm a Ronaldo fan. He misses a penalty and was crying. And I was watching with my mates and they're like, "Arey yaar, itna ro raha hai. Iski mom bhi ro rahi hai." And I was just sitting there. You will not get it. You will not get what he's going through right now. Yeah. Because the whole country wants him to score. The whole world is looking at him. He wants to score so badly. And then he misses. And he misses it. And it's live. You can't be like, dobara marta hu. It's gone. So, if you're not hungry enough in sports, I think, I don't know about other, it's difficult to sustain for a longer time. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।